in Pediatrics Department of PIMS Jalandhar. She is a gold medalist pediatrician with specialization in the care of newborn babies. She has many publications in national and international pediatric journals. She has authored various chapters in neonatology textbooks. She is the recipient of IJP Best Original Research Award. Currently, she is doing research on adolescent body image issues. She is always keen to learn new things. We welcome ma'am to this webinar, and today she'll be sharing with us various topics, various issues and challenges faced by teenagers, particularly in this COVID era. I request all of you to listen to her attentively. Now I request Dr. Anuradha Bansal to please share her expert views. Thank you so much, ma'am, for the lovely introduction. At the outset, I would like to thank Principal Dr. Jaggoop Singh, Professor Sanjay Bansal, HOD Pharmacy Department, ma'am, Mrs. Meena Bansal, for organizing this webinar. It's really commendable to continue learning in this difficult time. So, before starting, I would like to stress, if you have any concerns, not only regarding to this webinar, if any of the students has any concerns in any field, you can message to me in chat privately, and I would love to answer your concerns to the best of my capacity. जब किसी भी टाइम तक लगे कि मेरी स्पीड तेज हो रही है, you can just stop me and we can slow down a bit. Now I will start my screen sharing. ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋ ਜਿਸ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਲਈ WHO ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੇਮ यूज करता है which is called awesome AYA, awesome adolescent and young adults. So you are the awesome people in the age group of 10 to 25 years of age. And why are you awesome? Because you are not children. ਤੁਸੀਂ grown ups हो, ਤੁਹਾਡੀ अपना एक opinion है, एक mindset है, ਤੁਸੀਂ अपने सारे tasks ਕਰਨ ਲਈ सोच सकते हो, decisions ले सकते हो, problem solving capabilities हैं ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ. But ਤੁਹਾਨੂੰ adults नहीं ਕਹਿੰਦੇ. ਉਹਦਾ रीजन ये है कि इस एज दे विच थिंकिंग स्किल्स फुली डेवलप होंदियां ने, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स डेवलप होंदियां ने, लेकिन ब्रेन दा सब तो अगे वाला हिस्सा जो ना बोलना सिखांदा है, अपने आप को कंट्रोल करना सिखांदा है, इनहिबिटरी सेंटर जिहड़ा हुंदा है वो हजे पूरा नहीं डेवलप होया हुंदा. उन्होंने सीखना, उन्होंने अपने आप कंट्रोल करना या डेवलप करना बिफोर टाइम उन्होंने कहते हैं लाइफ स्किल्स लर्न करना. एंड व्हाई इज दैट इंपॉर्टेंट? क्योंकि आजकल दे हर स्टूडेंट्स ਨੂੰ कुछ नवे स्ट्रेसेस फेस करने पै रहे हैं एज कंपेयर टू व्हिच वी यूज्ड टू फेस व्हेन वी वर स्टूडेंट्स. हाउ टू अडैप्ट टू दिस फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड. आज तो 6 महीने पहले प्रॉब्लम ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਚੱਲ ਯਾਰ ਗੇੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾसेस कॉलेज ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਟੀਚਰਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ. ऑन द कॉन्ट्रेरी ਹੁਣ ਕਲਾसेस ਘਰੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੈਬਿਨਾਰਸ ਨੇ, ਵੈਬਕਾਸਟ ਨੇ, ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰग्स ਨੇ. that's a big change in the life of school students, college students as well as our lives. ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੂਡ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕੁਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੂਡ ਚੇਂਜ ਕਰੋ. ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੇਂजेस ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. Then there is a lot of competition everywhere, in home, at work, in office. How to stay away from these negative influences of life, and how to face everyday life situations which sometimes become frustrating. To do that, we need life skills. So life skills are basically our ability to handle daily tasks and face the challenges किसी भी टाइम, किसी भी जगह पे, किसी भी तरह. If we follow a pattern in our life, we can easily face these life skills. How to do that, we'll discuss in a few slides now. I hope I'm audible to everyone.
Yes. Thank you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you so much for confirming. So first and foremost thing is building resilience. Resilience means कोई भी situation है सानू पता होना चाहिए ਅਸੀਂ face कर लांगे ਅਸੀਂ solve कर लांगे. How to do that? Let's see in a few slides. Manage stress, that you have already learned also in the last webinar from PIMS, which was by Dr. Himanshu Sarin. Most important thing in these days, healthy usage of media, any kind of media, TV, radio, Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn, how to use that and how to use it positively. Resist peer pressure. Peer pressure is कि तुझे लगता है तारे सारे friends कुछ कर रहे हैं तो तुझे लगता है तानू भी करना चाहिए. But उस तो पहला ये सोचना कि ये करना जरूरी है, ये करना ठीक है. उन्हें resist कितना करना है तो friends नू भी कितना persuade करना है towards positive side. Avoid high risk behavior like rash driving, negative influences towards which we feel withdrawn many times. Last thing is peer educators. This we will discuss in the end. So to build life skills, we don't need any special equipment. We just need 4H. We need our head because we need to think, solve problems, learn things, set our goals, what we want to do in life, use the resources, and this is all done using our head. Second is heart, because we need to be caring, we need to share our knowledge with others, give importance to relationships, having concern for others, empathy, feeling for the others, putting your feet in somebody else's shoes if you find that person in trouble. Social skills, all this needs a dedication from your heart, your hands for working and for giving what you can share, and above all, your health. If you are healthy, definitely you are happy. And if you're happy, you can face any challenge that comes in front of you. So की करना चाहिए resilience building ਲਈ एक तो है कि सानू हमेशा change handle करने ਲਈ तैयार रहना चाहिए. उन कोरोना तो आ गया, उन्होंने तो ਅਸੀਂ change नहीं कर सकते, but ਅਸੀਂ अपना lifestyle change कर सकते हैं. We can wear mask while going out. जान तो पहले एक बार सोच सकते हैं, जाना जरूरी है. फोन करके काम चल सकता है, ऑनलाइन ऑर्डर करके काम चल सकता है. जरूरी नहीं है कि हर बार स्टोर तो जाके कुछ परचेज करिए. मे बी ऐसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, इस चीज को पोस्टपोन कर सकते हैं. वो सब कुछ देख के जैसे इस चीज को अडैप्ट कर लेंगे तो इट्स वेरी गुड फॉर अस. सेम वे किसी को मिलना जरूरी है तो डिस्टेंस मेंटेन करके गल कर सकते हैं, 1 फुट की दूरी से गल कर सकते हैं. वेल एंड गुड. खुद मास्क पाया हुआ है, सामने वाले को कह सकते हैं जी मास्क ऊपर कर लो. हेल्दी चॉइसेस फ्रॉम अवेलेबल ऑप्शंस. तनु लगता है कि एक काम नु 4 तरीके नाल कीता जा सकता है, देन यू शुड बी एबल टू थिंक कि किस तरीके नाल करन नाल वो तनु बेस्ट रिजल्ट्स देगा ते किसी होर नु या तनु नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा. एनी डिफिकल्टी हैव अ पॉजिटिव अप्रोच. प्रॉब्लम है उन्हें चेंज नहीं कर सकते, पर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं. दुखी होने तो बजाय उनके सॉल्यूशंस सोच सकते हैं. दैट इज कॉल्ड रेजिलियंस. इफ यू हैव दिस अप्रोच टू द डिफिकल्टीज, एनी प्रॉब्लम यू कैन always sail through it. Now last time you had a lecture on stress management. From adolescent or young adult point of view, we always stress that stress is not always bad. There are 2 types of stress actually. One is use stress. जब कोई एग्जाम होता है, कोई कंपटीशन होता है, तो असी सोचते हैं कि प्रिपेयर करना है, प्रैक्टिस करनी है, अपने आप को रेडी करना है. That is use stress. This is good stress. It motivates a person, keeps him alert, prepares him to face the challenges. So this stress is important. It is good for a person. Like now, कोविड टाइम्स ने बाहर जाना है जरूरी है तो ਅਸੀਂ मास्क पा के गए, सैनिटाइजर पॉकेट च रख लिया, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ हैंड हाइजीन का ध्यान रखिया, कुछ भी टच किया अपने हैंड्स क्लीन कर लिया. उस तो बाद ਸਾਨੂੰ पता लगता है कि 1 हफ्ते बाद कि उस गैदरिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ पॉजिटिव पेशेंट ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਾ ਸਟ्रेस नहीं होएगा क्योंकि ਸਾਨੂੰ पता है ਅਸੀਂ प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते हैं, ਅਸੀਂ चांसेस बहुत घट. ऑन द अदर हैंड, इफ वी आर नॉट प्रिपेयर्ड, then we have excessive stress. That is called negative stress. अरे तो बाहर चले गए, कुछ नहीं होता. बाहर गए,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ prepared ਹਾਂ, if we haven't prepared well, then it is distress, and that is bad for our body, our mental health, our physical health. If we are well prepared for anything, that is eustress, which is a positive stress, keeps us alert and prepares us. So prepare well, convert distress into eustress, and you will never have negative stress. This holds true for everything: your competitions, your matches, your concerts, anything you are participating in, anything you have to face. Prepare well, you will never have distress, you will have eustress, which is good for you. Prepare kitna karna hai? You should have set a goal. You can have a chart or a poster in your room which you read every day. So goals should be smart. ਹੁਣ कोरोना तो बचन ਲਈ immunity strong होनी चाहिए है। immunity strong होनी चाहिए ਤੇ ਨਾਲ patient overweight होवे ਤਾਂ risk ज्यादा बढ़ता है। मैं सोचा मैं weight lose करना है, but ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਇੱਕ goal ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। specific 6 months ਦੇ ਵਿੱਚ 4 kgs lose ਕਰਨਾ ਹੈ। measurable, ਉਹਨੂੰ ਕਿਦਾਂ measure ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਕਿੰਨਾ loss ਹੋਇਆ, measurements ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। achievable, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ 15 ਦਿਨ ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ 5 ਕਿਲੋ ਘਟਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ goal achievable ਨਹੀਂ ਹੈ। that's not a smart goal। realistic, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ disease ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ weight ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ lose ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ realistic goal ਨਹੀਂ ਹੈ। goal should be realistic, time bound, कि इतनी देर से इतना काम करेंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा। So if our goals are smart, we know we can achieve them, then we will be able to prepare well. Use all possible resources. You can get information from YouTube, use it. You can get information from your friends who have done similar things, go ahead. Consistent efforts. ऐसा नहीं कि आज तक writing कर ली, कल गुलाब जामुन खा ले, फिर consistent effort नहीं है, फिर result नहीं आया। That holds true for everything. एग्जाम है, आज तक 24-18 घंटे पढ़ लिया, कल किताब खोल के नहीं देखी, 4 दिन नहीं खोल के देखी, फिर डिस्ट्रेस होएगा, फिर यूस्ट्रेस नहीं होएगा। गुड टाइम मैनेजमेंट, सेट असाइड टाइम फॉर एवरीथिंग, टाइम फॉर एंटरटेनमेंट, टाइम फॉर लेट्स से Zoom meeting with friends, WhatsApp room chat with friends, some time for your own social media usage। but सारा दिन एक को चीज करोगे, फिर you can't achieve your goals। फिर जब टाइम आएगा, फिर डिस्ट्रेस होएगा। You can have this kind of posters in your room for positive thinking। initially हर बंदे को लगता है यार नया काम में नहीं हो सकता। gradually when you keep on focusing, finally you think I can do it, I will do it, and finally you do it। so positive thinking definitely has a role। another important thing is self control। टारगेट कुछ हो रहा है पर कुछ और करने का मन कर रहा है, तो उन्हें कंट्रोल तो आप ही करना पड़ेगा। That is why this dragon has a leash in his own hands or tail, whatever you say। एग्जाम है, रणबीर कपूर की मूवी रिलीज हुई है, मूवी हफ्ते बाद भी देख सकते हैं, आज पढ़ लेंगे हैं, हफ्ते बाद मूवी देख लेंगे, दोनों ही काम होंगे। बट कम किया है सेल्फ कंट्रोल। ये सेल्फ कंट्रोल है तो टारगेट अचीव हो सकता है। एंड दैट होल्ड्स ट्रू फॉर एवरीथिंग। इन्ने महीने हो गए, 6 महीने हो गए कर्फ्यू, लॉकडाउन, रिस्ट्रिक्शंस होंदे नूं, दिल कर रहा है कि जाके एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट का फूड खाया जाए या खाना खाया जाए, तो उदी थां ते एक सब्सटीट्यूट तो आपे ही लभना पेगा कि यार चल घरे बना के खा लेंगे हैं, बाद चो जो ठीक हो जाएगा सारा कुछ उत्ते पे चला जाओ। दैट इज सेल्फ कंट्रोल। To prevent stress, have a balanced diet rich in all sorts of food, fruits, vegetables, curd, milk, paneer. If you don't like a particular food or you're allergic to it, find an alternate or substitute for that। Non-veg and your egg is the best protein that can help you। Adequate sleep is very important। If you have slept enough, your brain is helping you to fight out stress every time। There should be 1 hour of physical activity every day। बाहर जाना जरूरी नहीं है, अपनी बालकनी दे विच स्टेप काउंटर, फोन से स्टेप काउंटर डाउनलोड करो, पीडोमीटर डाउनलोड करो, 10,000 steps a day, good enough। if you have some passion for dancing, 1 hour of good aerobics, Zumba really helps। jogging and swimming is not possible right now, but there are many activities which you can do at home। 1 hour of yoga, any aerobics, on the spot running, you can play indoor games like badminton on your terrace, in your veranda, and that's really a stress buster as well as keeps you fit and increases your immunity also।
It's usually said if a person has a hobby, that person never gets depressed, because whenever that person feels low, he pursues that hobby. Anything you have, listening to music, playing an instrument, dancing, whatever it is, pursue it. Go for it. Give at least some time of the day to your hobby. Whatever you want. You want to learn something, you want to do something. Set aside some time of the day for your hobby. If you're interested, you can practice yoga, you can practice meditation. That helps. Now distress हो गया, की करना है, प्रिवेंट कर लिए सारे एफर्ट्स कर ले, फिर भी डिस्ट्रेस तो हो रहा है, हमने टाइम हो गया सानू घरे बैठे हुए, किसी ਨੂੰ नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं। सब तो ਵੱਡੀ ਗੱਲ, talk it out, talk to someone, either your parents or some trustworthy adult. That adult can be anyone, even your teachers like Professor Sanjay Bansal. I'm very sure he would be happy to lend out a helping hand. Mrs. Meera Bansal, you can talk to her anytime. I know she is such a lovely lady. You can keep a mood diary. किस चीज ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ मूड अच्छा ਹੁੰਦਾ है ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 네ਗੇਟਿਵ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। There are many moral boosting books online. Order one on Amazon. Go through it. You will feel good. ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ strengths ਤੇ achievements note ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. Right from the day you entered your school, university, whatever positive you achieved, write in that diary. When you feel negative, read that. ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ chits ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ तीन ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ। Just write it down. कुछ भी अच्छा होया, किसी ने ਤੁਹਾਨੂੰ handsome बोलिया, किसी ने ਤੁਹਾਨੂੰ beautiful बोलिया, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ song ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छा लग्या, write it down on a chit, put it in that jar. ਜਦੋਂ मूड खराब होता है वो jar खोलो, सारी chits ਨੂੰ पढ़ो, अपने आप सारी negative thoughts चली जाएंगे। Help the community, contribute to the community, help the needy. It's a great stress buster. Sometimes ਜਦੋਂ मेरा मूड ऑफ होता है, मैं जाते जाते बस किसी रास्ते किसी बच्चे ਨੂੰ एक बनाना या एक बिस्किट का पैकेट दे देती हूँ। It really helps. The smile on their faces, it makes you feel very good. If you feel something is not right, say no. Learn to say no. ये नहीं सोचना कि उस सामने वाले को बुरा लग जाएगा। जितना लगता है चीज गलत है, learn to say no. It's very important. It helps throughout your life. Always have positive self-talk. Like I can manage. This too shall pass. Somebody must have read Gone with the Wind. The main character Scarlett O'Hara, whenever she faces a problem in that Second World War time when everything was so bad, कुछ भी बुरा होता से एक तो काम करती सो जाती सी, कल देख, I will think about it tomorrow, this too shall pass. And ultimately she came out of those situations, bad situations like losing out on entire property, losing on the entire family. She sailed through those problems, although it's a fiction, but these things work. Positive self-talk, I can manage, I will be able to sail through it, all is well. Like Ranchod Das Chanchad used to say, all is well. This really helps. So when in distress, talk it out, keep up your morale, contribute to community. When normal times, you can say कि लंगर से सेवा कराओ जी, वो भी बहुत helpful चीज होती है. Talk positively to yourself, and definitely it will help you. If despite all this, you have persistently low mood, you feel irritable all the time, कोई बुलाए मूड अच्छा नहीं है, जिन्ना एक्टिविटी से पहला इंटरेस्ट सीखा उधर से इंटरेस्ट नहीं है, if all this lasts for more than 2 weeks, you should seek professional help. That's very important. If these symptoms last more than 2 weeks, that means you are not able to help yourself. You need somebody's intervention to make you well. So at this stage, do not ignore it. Please talk to someone and see some professional. जरूरी नहीं साइकेट्रिस्ट ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ. He will also help you. Now this is the most important thing in today's times: responsible media usage. Responsible doesn't mean that you have to be responsible. It means that you have to use it in such a way that it doesn't harm you today, tomorrow, or any time in future. That is because ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪਿਕ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਨਲਾਈਨ, it leaves a permanent electronic footprint. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ delete ਕਰਤਾ, but it gets saved somewhere, and that can be accessed by the hackers. So before posting anything online, before posting any comment, many times something is posted on Facebook or Twitter, and everybody is just goes in that flow, starts posting in that line, but you never know when can that post be used against you.
So if you feel that post is controversial, stay away from it. Many times these college students like JNU and all, sometimes somebody just writes a comment, ठीक है सब लिख रहे हैं मैंने भी लिख दिया, but जे ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ पुलिस ने पहना है तो वो comment ਤੁਹਾਡੇ against use हो सकता है. So anything you comment, any picture you post online, once posted cannot be erased. So it's important that you think before you do anything. Sexting and cyberbullying is punishable by law. If there is a record of your sexting with the recipient, you are punishable. You can be arrested. Never reveal any personal information on net. Your name, address, phone number, unless you know the person. Do not share your account details, your personal details with anybody. You know, मेरे को कई पेशेंट्स आते हैं तो कहते मैम ਤੁਹਾਡੀ फैमिली ਦੀ फोटोज बड़ी क्यूट है. उस तो बाद मैं अपनी फैमिली की फोटोज पोस्ट करनी बंद कर देती हूँ, बिकॉज माई पर्सनल लाइफ शुड आइदर बी विद माई shared with my friends or my close relatives. Why should everybody in this world be knowing about it? Many times there are messages on social media that when the parents post pictures of the children, they're seen by predators, they're seen by kidnappers. ਤੁਸੀਂ post करता जी मेरा बच्चा आज इस स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ इस टाइम तो इस टाइम ਤੇ ਗਿਆ, सारा कुछ पता लग गया predators, they know everything. So never reveal any personal info on net. There are predators, there are hackers who use the pictures or videos innocently posted on media by the youth, and they can misuse them to any extent. We don't even know to what extent they can do. So we should not reveal any personal information on it. Use it for entertainment, use it for gathering as much as knowledge as possible. Use it as a resource, but don't be a victim to it. Never, never, never click on the save password icon. Remember your passwords, keep them in a safe place, but don't save them on the internet. If you feel that you are being bullied by somebody on net, first of all, stop using that site. Stay away from that site. More importantly, share that instance with a trustworthy adult. You can report the instance also with the cybercrime branch, and I'm sure it will be investigated and managed. But first of all, stop giving importance to that bully. Stay away from it. Now comes peer educators. Peers means friends. So peer educators means friends who can become educators. So like in a batch of 100 students or 50 students, there are 3-4 students who are very positive. So if somebody has problem in their yeah, I'm sorry, the connection was lost, probably some internet problem. So we were at peer educators. So peer educators basically the काम होता है कि जे a knack for helping people. जे साडे friends which किसी को problem होती है
This is the last slide. I think there's a lot of problem with the internet. So I come to the last slide. That is. So that is all we have in life skills. This is this is basically a handout. If you want, you can have it from me and paste it in your room. How to manage stress, what life skills to be learned, and how to be a responsible digital citizen. Just when you get up in the morning, have a look at it, and maybe it helps you learn a few things in life. Thank you so much. If you have any questions, I can answer in chat. And I hand over the mic to the organizers now. Good morning, all. Am I audible? Yes, sir. That's all. We can have the questions in the chat, or if they want, we can just have face to face and we can answer. Okay, time is running out. Good morning, all. Dr. Anuradha, Head of Departments and faculty members. Today's topic of webinar, life skills in college students by Dr. Anu is very apt, keeping in mind the current pandemic. डॉक्टर अनुराधा ने आज हमें यू स्ट्रेस के बारे में बताया, दैट इज पॉजिटिव स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस इज नेगेटिव स्ट्रेस. डॉक्टर अनुराधा ने हमें बताया कि स्मार्ट गोल्स सेट करने चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, स्ट्रेस प्रिवेंशन टेक्निक्स फॉलो करनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबल मीडिया यूजेज पर ध्यान देना चाहिए. तो ऑल स्टूडेंट्स मस्ट अडेप्ट देमसेल्व्स टू दीज स्किल्स. आजकल स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन क्लास लगा रहे हैं उसमें कई स्टूडेंट्स को इंटरनेट की प्रॉब्लम आती है, कई बार उनका इंटरनेट बीच में बंद हो जाता है, उनका लेक्चर मिस हो जाता है. सो वी आर ट्राइंग कि हम जो लेक्चर है हम यूट्यूब पर शेयर करें. उससे फायदा ये होगा कि जब भी स्टूडेंट्स का नेट अवेलेबल है तो वो उस वीडियो को दोबारा से व्यू कर सकते हैं. I am thankful to Dr. Anuradha Bansal for guiding our students. I am thankful to Mr. Sheetal, PRO, FIMS, for arranging the webinar. I am thankful to all HODs and faculty members for sparing their valuable time, and especially Mr. Rajiv Bhatia ji and Kapil Ori and Mr. Harvinder Kamal. He is Vice Chairman of IPA. So I am thankful again to Dr. Anuradha for sparing her valuable time. Thanks all. Have a good day. Thank you so much. बेटे फीडबैक फॉर्म आपका अपलोड कर दिया है मिस्टर करेंद्र सर ने. सो ऑल ऑफ यू मस्ट गिव योर फीडबैक. हमारे मंजू मैडम अप्लाइड साइंस के इंचार्ज हैं, वो भी आज हमारे यहाँ बीच में मीटिंग में अवेलेबल हैं. रिचा मैडम मैकेनिकल डिपार्टमेंट के हेड हैं, वो भी अब आज वेबिनार में हैं. वी आर थैंकफुल टू देम ऑल्सो. अगर किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन है तो वो अपना हैंड रेज कर सकता है. Okay, Doctor. If you don't want to ask like that, it can be privately also. You can send me in chat in private and I will answer it privately. Okay, sure.